regular expression. The union of these two complements is regular, as well as the complement of this union is also regular. So we had proven that L1 intersection L2 is regular. Then we tried it using FAs. So in the FAs we had taken two examples, two FAs, one which has double A and the other one that has even number of A's. So the prime we constructed by reversing your finality of the state. All the states that were non-final now became final to accept the complement of the language, and the final state became non-final. So that's how we computed the complement using the FAs. Now, as just for study purposes, we computed the regular expression, converted the FAs into TGs, and then computed the regular expression. So this we had done, but the original algorithm only required us to compute L1 prime, L1 intersection L2, and we computed FA1 prime and FA2 prime. From that we so for computing FA1 prime plus union of FA1 prime and FA2 prime, we constructed our transition table and we constructed this FA. So did anyone try to find the regular expression of this FA using the algorithm that we have been using for the test also in the previous lecture also? Can anybody guide me through this? Can anyone help me with this? Anyone? Which state will you try to eliminate first? Which edge will you try to eliminate first? Now tell me. I will not move till somebody opts in. Then Z5 to Z3 वाला. If you're not answering, I'm not moving. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको फिक्स करना पड़ेगा, एक नल ट्रांजिशन से इसकी इनिशियल स्टेट भी बनानी पड़ेगी, एक फाइनल स्टेट भी, क्योंकि इनिशियल स्टेट में एक्सेप्टिंग भी है और आउटगोइंग भी है. Okay, I'm going on mute. Then you are ready to answer. I will move then. I'm muting myself. Only if you are ready to answer, then only I'll move. Hello. Hello, ma'am. Can you hear us? Hello. मैम ने हमको हमारी आवाज नहीं आ रही है. क्लासरूम में लिख दे. अरे I'm मैम को not able व्हाट्सएप कर to. दे. Just a second, okay? Let me just see my. Can you try speaking now? Hello. Ashwin, you unmute and try speaking. Wait, still not. Just a second. Give me a minute. चलो देखना पड़ेगा ना मैम के साइड. Ma'am, I have turned in late. मैम को हमारी आवाज नहीं आ रही. Now would you try? Hello. Just try. Yes, ma'am. Now is I have now raised the maximum volume, but I cannot hear you.
यार अभी भी नहीं जा रही। मैम कैसे नहीं आ रही? Will you try now? Are you trying? Just write in the chat. Yeah. You can hear me, but I okay. So are you trying to speak? Yes. Okay, just a second. माइक नहीं बन गया आज। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि लाइक एक अलग सी स्टेट थी जिसमें दो आ रहे थे पीछे। तो मेरे को पता नहीं था वो कंसिडर करूँ या नहीं करूँ, मैंने कंसिडर कर लिया। लाइक मान ले कि ना अगर अगर एक स्टेट इनिशियल स्टेट से पास नहीं कर रहा है बट इनपुट दे रहा है तो फिर वो लेंगे ना। अरे शांत हो जाओ भाई, मेरे क्या मैंने लेट डाला है, मैम को बताओ पहले। अरे तो डाल देना। मैम को बता दे दे। किसने करा है तेरा क्वेश्चन। पूछ ले किसने करा है। And can you attempt now? हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो चेक Okay, चेक। I can see Ashwin and Santosh. There are so many people who are trying. Okay, but I cannot hear you. I'm so हेलो sorry. चेक Just a चेक माइक चेक। हेलो माइक चेक हेलो हेलो माइक चेक। डीजे रमेश। अरे ऐसा तो नहीं हुआ कि सिर्फ माइक। मैम के कहीं ब्राउजर में कुछ तो पंगा नहीं है। अरे ब्राउजर में नहीं, मैम ने हेडफोन लगा रखे हैं क्या? अरे तुम मेरे को एक चीज बताओ, तुम रोज हाँ, क्लास अगर लेते हेडफोन हो, लगा रखे मेरा होंगे तो इतना पूरी सिंपल सा क्वेश्चन नहीं करवा पाए। मैंने खुद मतलब अकल लगा ली, मेरे को स्टेप्स नहीं आते थे। भाई बेटा ध्यान से बोलो, कहीं मैम की आवाज अचानक से आ गई ना। फिर तो मैम कहेगी यार इसका तो काम ही नहीं देखना है, सीधे मार्किंग मार्किंग करनी है इसकी तो। भाई अरे संचित भाई जैन ने भाई सही भगवान सिखाया, इंसान है लेकिन भाई, कुणाल वो सीख नहीं भगवान पाया इंसान संचित है। जैन की भाषा। बड़ा मिसालें देते हैं लोग संचित जैन की, ठीक है। अरे तो कुणाल नहीं सीख पाया ना, संचित जैन को तो सब आता है भाई, कुणाल नहीं सीख पाया। अबे रात को सही बता रहा था, वो सो के उठा ना, वो सारा गलत हो गया उसका तभी। बोल रहे थे आता आधा वो खेल रहे। चले गया वो संचित जैन का ज्ञान। भाई मेरे गुरुजी ने जो मेरे को बताया था, मैंने वो कर दिया। नहीं भाई, नहीं नहीं बेटा भाई, तुमने कहाँ गुरुजी यार। से गलत सीख लिया, मैंने तुम्हारी 2 सेकंड में गलती निकाली है। अरे भाई रात अभी तक तो मैंने ठीक ध्यान से सीखा था सर ने, रात तक बढ़िया सीखा था। वो छोड़, प्रकृति वाला जो सवाल नहीं है बड़ा जस्ट वाला। रिमाइंडर मैम कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड नहीं और कभी वॉल्यूम आ सकता है। डिस्कनेक्ट हो गया। अरे वो प्रकृति वाला सवाल नहीं था, बहुत बड़ा था, जो पूछ रही थी उस दिन ग्रुप में, वो सॉल्व करा था कुणाल ने। अरे मेरे को वो क्वेश्चन आता है, मेरे को वो असाइन करा था, मेरे को भाई बनाना मैं ही नहीं तो आया इम्प्रेस हो वो। गया, स्टोरी डेडिकेट कर दी मैंने कुणाल को। एक दूसरे की स्टोरी शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे बैठ के। लग रहा हटानी पड़ेगी अब। पहले ये कर लेते हैं हम लोग। और इसका ढक्कन कहाँ गया? ओए अमंग अस डाउनलोड कर लो, आज रात को अमंग अस खेलते हैं। कल नहीं परसों। क्या द लास्ट अमंग अस? अबे नहीं, लास्ट ऑफ अस वो डिफरेंट है, लास्ट अमंग अस नहीं होता। लास्ट ऑफ हाँ अस वही तो पूछ रहा था कैसे खेल रहे हो। अरे नहीं, लास्ट अबे अमंग अस डिफरेंट है, लास्ट अमंग अस नहीं है, लास्ट ऑफ अस है नाम टाइटल। अरे एक अमंग अस करके भी था यार कुछ। हाँ अमंग अस करके वो छोटी सी गेम है, 5 MB वाली है ना। वाह, बट कोई नहीं, तुम देख लेना, तुम देखो। नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई करनी नहीं। Now can you try speaking, everyone? Can you hear me? हेलो मैम, हेलो। हेलो बोल ही रहे हैं हेलो हमारा। हेलो। वायो गोजाइमास।
अभी भी नहीं आ रहा। Ashwin is trying to speak, I guess. Maybe everybody is He's saying trying to here speak. that I can't still hear you. Okay, then let. No, I have attached a different Classes device में also. I don't know what's happening. Okay. मैम प्रेस मैम को बोलो speech Alt में plus My F4 मैम. mic is on full Communicated. and no chutti. I will say and then you will just listen. I will not ask you to ask or say anything. फिर भी बढ़ाएगी भाई. If I try to rejoin, then all of you will have to, because that's then if I rejoin, basically I will have to disconnect this class. All of you have to drop out again, and then that is the problem with Google. अरे Okay. Anyways, relax. no, you will stay in the meeting, but okay, then let me try. I okay. Wait, what is the meeting invite? Can you just send the meeting? अच्छा वो मैंने classroom पे डाला है. Wait, okay, I'll Hello, just hello, hello, try to hello, drop hello, off and ma'am. join. Hello. गेम भी वाला चल रहा है भाई। अब मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि मैम हमारे साथ प्रैंक कर रही है, मैम को उसी टाइम रिप्लाई आ गया, मैं डर गई, मैंने मैम को सुनाई दे रहा है। अरे टेंशन मत ले भाई, तूने अपनी फोटो में पीठ दिखा रखी है, मैम को नहीं पता तू कौन है। नाम तो है ही नहीं लिखा हुआ जैसे। मैम कह रही है कि अभी पता करती हूँ किसने खुद से करा किसने नहीं करा है। मैंने भी बहुत काटाबेटी करी है, मैंने मैम को समझ आ गया तो Okay, बहुत बढ़िया now बात, नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात। Hello, hello. now one of you try to speak. हेलो 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 Hello. मैम, आप आपसे संपर्क करना चाहते हैं? अरे यार, is this a fish market or what? Shut up. अरे नहीं, ये डायलॉग नहीं होता था, वो कहती थी ना, बेटा दिस इज द वर्स्ट क्लास आई हैव एवर सीन इन माय होल टीचिंग करियर। अरे मेरी इंग्लिश वाली भाई मस्त 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 डायलॉग मारती थी। एक ये मारती थी कि व्हाट आर यू वेटिंग फॉर काउस टू कम होम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस। क्या चल रहा है, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे रिपोर्टर ज्ञानेश। अरे मेरे ग्रुप ज्ञानेश, में शामिल हो गए मैम। पूजा I पाठ can see वगैरह that you are speaking, but you are not audible. Maybe there is some चलो ये अच्छी problem बात है। in the device. Don't, no worries. I will just speak and Hello. you will be able to understand whatever your अगर रिकॉर्ड inputs अरे are. रिकॉर्ड Maybe होगा तो next क्या time we पता can आवाज put आए that ना। later. ओ But भाई I will भाई। continue with the class. अब एक रास्ता रह गया, मैम तो बोलो विंडो डाल दो सीधी, नई विंडो। हाँ, लैपटॉप फेंक दो खिड़की के बाहर, बाद में देखेंगे, छोड़ो पर classes. क्या प्रख्यात भेजेगा ना नया नवेला लैपटॉप। खुद तो चला हाँ, रहा मैं उठा के भेज दूंगा। मैम ये लो मैम, एसर प्रेडेटर मैम ये लो। एडिटर तो पुराना है। यार किडनी बेच के लेना है। वो 12 बजे के बाद गेम नहीं खेल सकता, तू क्या कह रहा है, अबे लैपटॉप कहाँ यार, भेज रहा है वो। सही में तब तक किसी ने रोका नहीं ना। अब इट्स लाइक मेरा एक वो सेट टाइमर है कि 12 Okay, बजे so के I बाद अगर will पता just चल keep गया running back and forth in तो your मेरा मैक एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा। एक तो ना in the जियो में chat इतने window सारे because राइट्स I'm दे not रखे हैं able ना, to hear you जिसके बाद भी everything. लॉगिन आता है। I can see Prakhyat, Kunal, Ashwin, and Harsh unmuted. So I would just request you all to mute yourself because it will disturb others. क्या ही अरे फर्क यार, Kindly पड़ता मैं mute तो कहता हूँ yourself. मैम को म्यूट कर देते हैं, मस्त से बातें करते हैं। Yes, Kunal, please mute. Great, thank you. So I'm so sorry for this. Probably something has crashed. So I'll figure it out later. Let me just start with the deriving the L1 prime, L1 interaction L2, intersection L2. So where I was, so let me just try to eliminate this state Z4. So to eliminate this state, if I want, I need to first eliminate its edges. तो आप किसी भी स्टेट को डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. So when you are trying to eliminate its edges, we have this edge that we have to eliminate, and okay, so we have to eliminate this edge Z2 to Z4. We have to eliminate Z4 to Z4, and we have to eliminate Z4 to Z6. So is there any other loop if we can find? I don't think so.
So what we can simply do is combine B star A. So from Z2 to Z6 you can form an arrow, and so because you are going via Z4, so you will say B star A and reach Z6. And I think we really don't need anything else. Is there any other state connected to Z4? I can't see that happening. So that's what we are doing. Okay, so he has tried to bypass Z5. Okay, I'll come to that later. But if we are trying to eliminate Z4, we will do BB star A. And in case we are going to eliminate Z5, to eliminate Z5, you have to eliminate this, and this complete thing you have to eliminate, and you have to eliminate this thing. So from Z6 to Z3 you can create a loop using A B star A, and from Z3 to Z5 and then back to Z3 you have A B star A. So that's what has happened. Z6 to Z3 you have via Z5 you have A B star A, plus Z3 was going over here A B star A. So from Z3 to Z3 you have another loop. Just let me check if you have anything. Yeah, so okay, so I have read all your chat messages. Thank you for the inputs. I will do what is required, and so I hope this is clear. Just put it in the chat if Z5 elimination and Z4 elimination is clear. I have just now told you how to eliminate Z5 and how to eliminate Z4. So if this is clear, okay, Sachin is clear. Just one more response so that I can move ahead. Okay. So by eliminating, so we had already eliminated Z5 and now they have eliminated Z4. So same thing would happen. Z2 to Z4 to Z6 you have to create this thing. So this is what has happened. Z2 to Z6 you have created a BB star A loop, and Z5 was already eliminated. Now we want to eliminate Z6. So to eliminate Z6 you have to take care of this edge, you have to take care of this thing, and you have to take care of this thing. So you are doing a Z2, Z6 and Z1 loop thing. So to eliminate Z6, you have to first eliminate this edge. So from Z2 to Z6, you are going to Z1. So this simply becomes BB star A B. So here BB star A B, and now we will do elimination of Z from Z2 to Z. I think no. You can do elimination of AB star A. Okay. So from Z3 I am getting an input of AB star A from Z6. So simply this is a loop which is AB star A, and you already had a loop here AB star A plus B. So you are combining all these things. So basically what is happening is from Z2, this is BB star A, AB star A back to Z3. So if you want to eliminate Z6, if one thing is you can go to Z1 or you can go to Z3. So Z2 is covering this thing via Z6 and this thing via Z6. So what simply we have to do is BB star A and AB star A back to Z3. So instead of going via Z6, you have just simply eliminated and concatenated this thing. I'm assuming this is clear. Is this clear?
Okay. And now what happens is you want to combine Z2 and Z3. So you already had this BB star A, AB star A going to Z3, and you have another option which is A. So to go to Z3, you can either choose A or you can choose this path. So you can simply combine this using a union. So this is possible, and this will eliminate this edge. That's what we have done over here. If you can see, I have simply combined two edges with a union because we had a choice either to go to the A route or the BB star AB star A route. Now I want to eliminate Z2. So to eliminate Z2, there are two things that you have to think about. One is to eliminate Z2, you are forming this loop. Z1 from Z1 to Z2 back to Z1. So this thing becomes a loop in Z1, which is A BB star AB. So A BB star AB can form a loop. Here you have done A BB star AB. The other thing is, instead of going back, you can go forward, which is A concatenated with this entire thing, A dot A plus BB star A B star A, and you can go to Z3. So this was one thing. To eliminate Z2, you have to take care of these two things. So this has been done like this, and a direct arrow over here. So now you are on the minus to plus path. Is this clear till now? Is this elimination clear? Elimination of Z2. I think this is pretty simple. Z1, Z2, वापस Z1, and Z1, Z2 to Z3. Great. So now you can see simply that this is directly an edge from minus to plus state, but these things have to be taken care of. So there is a loop B plus ABB star AB. So you simply can combine these two edges and take a union. So this becomes, this is B APP plus star A, and that edge we had already labeled something like क्लोजर this, नहीं होगा इसका? and the loop. अच्छा आसपास. Now this is the closure. So this can be represented as B A plus BB star A the whole star. Then you can simply concatenate it with what is going over the edge. And then once you reach Z3, you are looping with this expression. So this is the FA that accepts the intersection and of L1 and L2, and this is the regular expression that we derived. Okay, so this is the regular expression we derived. Is this clear? So this is the regular expression of the language L1 intersection L2. There are more regular expression possible, and of course there are more FAs possible. But given what was there in the FA, we derived this expression. Is this clear? Okay. Okay, so what we have done so far, just let me just give you once again a revision. We had L1, so we computed we created FAs of L1 and L2. We computed their primes. Okay, L1 prime plus L2 prime. So we did FA1 prime and FA2 prime. After that, what we did, the next step was to create FA1 prime plus FA2 prime. So we used the algorithm, and by just finding out which states, we created a transition table of FA1 prime plus FA2 prime. Now to get a FA1 prime plus to get L1 prime plus L1 intersection L2, what we had to do was FA1 prime plus FA2 prime we had created, and and then we had to compute the complement of this. So whatever was here final became non-final over here in this complement, and the only thing that was
non-final became final. This is how we computed L1 intersection L2, and obviously this was too much to handle. So is there any simpler way we could do this? We have done so much, like, you know, creating FAs, original FAs, then creating finding out their complements, then doing a union of them, and then after doing a union of them, we have again reversed the finality of the state. So there is one simpler method. You can simply say what is L1 intersection L2. L1 intersection L2 is FA1 and FA2. So something that is being accepted by both FA1 as well as an FA2. So instead of going, you know, all the way there, you can simply do one thing, that anything that is accepted in the final states of both FA1 as well as FA2 is what is accepted. So I have two FAs, and whenever I create a union of them, I will create, whenever I create the union of them, I will keep something is as final only if it is final in both FAs. Is this justified? To compute L1 intersection L2, what I am trying to say is, instead of, you know, going so much, if you have one FA and one FA here, so we accept something in the language L1 intersection L2 only if that word lands up in plus state of FA1 as well as in plus state of FA2. Is it a valid thing to say? Just type in the chat. Is it more logical कि अगर intersection का क्या मतलब होता है? Intersection है कि दोनों सेट्स में होना चाहिए. दोनों सेट्स में कैसे आएगा? जब FA1 में भी एक्सेप्ट हो जाएगा और FA2 में भी एक्सेप्ट हो जाएगा. तो अगर मैं FA1 प्लस FA2 बनाऊं और सिर्फ जो दोनों में फाइनल हैं उनको फाइनल करूं, सिर्फ उसी को फाइनल स्टेट मानूं, तो मेरा काम बन सकता है. Anyone can just type in the chat. I am simply saying combine these FAs using Kleen's theorem, and हमने either FA1 FA2 किया था, अब उसकी जगह only those states that are final in FA1 and FA2 make them final. Is it justified to say? Type in chat, please. Are you thinking? Okay, you think so, but you are not sure. Okay, anyone else who thinks or who disagrees or agrees? Have you understood what I am trying to say? And if you have not understood, just type no that we have not understood. Okay, so okay, just going back, what we have done so far, just listen to me carefully. Abhi tak FA1 and FA2 we had. So what we did was we created FA1 prime and we created FA2 prime. Then we computed the union of those things. Okay. And after computing the union of all this, we found the complement by reversing this, the FA that I got from here, reversing the final states of this, I got the complement which was equivalent to this, right? This is what we have done so far. Now I'm saying, instead of, you know, going all this way, if something lands up in L1 intersection L2, that means it is in both this as well as this. So for it to be in both FA1 as well as FA2, it has that particular string has to land up here if we run it in FA1, and it has to land up here if we run it in FA2. So instead of, you know, doing all this or taking all these steps, why not simply combine these FA, take a union of them, take a union of all the words accepted by FA1 as well as FA2, but choose only those words as final where only those states are final where both the final states of FAs occur. क्योंकि दोनों के एक्सेप्टेंस स्टेट में जाओगे, अगर एक स्ट्रिंग इसके एक्सेप्टेंस में भी जा रहा है और इसके एक्सेप्टेंस स्टेट में भी जा रहा है, इसका मतलब वही स्ट्रिंग यहाँ भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, और हमें वही कंप्यूट करना है.
तो मैं ये बोल रही हूँ दोनों एफएस को कंबाइन कर दो और जहाँ पे दोनों स्टेट्स फाइनल हो उसी स्टेट को फाइनल रखो। तो ये क्या मैं सही बोल रही हूँ, जस्टिफाइड है? पहले तो समझ आया है ज्ञानेश क्या बोला? तो क्या अब तुम्हें लग रहा है कि ये बात लॉजिकल है? Okay, so Sai Sachin, now are you very sure of this? Okay, okay, Chirag. So because you were doubtful because Sai Sachin, so are you now sure? Great. So I am taking your input as everyone's input. So this is a simpler method to do this. आप बोलोगे कि फिर इतनी कहानी क्यों करी, थोड़ा विश्वास उठ जाएगा कि ये क्यों है. So to only to help you appreciate कि this was possible, so we didn't have to go that long way. So there are something called smart work and there is something called hard work. So the earlier method was hard work and this one is smart work. As simple as that. So what we are doing over here is FA1 or FA2. I start combining this. So Z1, the initial state is this as well as this, X1 or Y1, but none of them are final here, because only y1 is final but x1 is not final, so I will not count this as final state. This remains my initial state, because according to this discussion only that state will become final which has both this x2 state as well as y1 state. So I'm sorry I have not numbered this, I should have numbered this x1, take this as x2, and I think we can take this as x3. So let me call this as y1 and let me call this as y2. So all the states that have x3 और y1 will be final. अगर किसी में सिर्फ x3 आ रहा है, किसी में सिर्फ y1 आ रहा है, तो उसको हम फाइनल नहीं मानेंगे, दोनों को होना चाहिए. ओके, तो x1 or y1 is not final, but yes, on an input A I can move to x2, and in y1 if I get an input A I move to y2, and if I get an input B I stay in x1, and if I get input B I stay in y1. So this is a transition for z1. Now I've already created a new state which is x2 y2, and if you notice that since x2 is not final and y2 is not final, so z2 is also not final. So on input A I reach x3, and input A I reach on x2's input A I reach x3, on y2's input A I reach y1. So this becomes my new state. y1 is final, yes, and x3 is also final. This is x3 and this is y1. Both of them are final, so I will say this z3 state is my final state. Okay, agreed? Because दोनों final है, तो सिर्फ इसको ही final मान. अब इनपुट बी, अगर इनपुट बी x2 में अगर इनपुट बी आया तो मैं वापस x1 पे जाऊंगी, और अगर इनपुट y2 में अगर b आया तो मैं y2 में ही रहूंगी, which is z4. Neither x1 nor y2 are final, so my z4 is also not final. Any questions so far? Okay. So I have created Z1, Z2, Z3 and Z4. Now because I found Z3 as final, just let me remember that it's final. Now on an input A in X3, I stay here, and on input A in Y1, I go to Y2. X3 was final, but Y2 is not final, so I will not say that my Z5 is final. On input B, I stay in X3, and on input B in Y1, I stay in Y1, which is Z3 itself. Then I've created Z4, which is X1 or Y2. So on input A in X1, I go to X2, not final. And in Y2, if I get an input A, I go back to Y1, which is not final, which is Z, and I call it at Z6.
On input B in X1, I say in X1. On input B in Y2, I say in Y2, which was my Z4 state. Again, I go to Z5, which is X3 और Y2. Input A X3 में ही रहे और इनपुट बी ए में Y1 में Y2 में वापस Y1 में चले गए, which is Z3. And X3 is final and Y1 is final, so Z3 was final. And X3 में अगर इनपुट B आया तो X3 और Y2 में अगर इनपुट B आया तो Y2, which is my state Z5. Z6 बनाई थी which was X2 और Y1. तो अगर Z6 में X2 में अगर इनपुट A आया तो X3 पे चले गए और Y1 में इनपुट A आया तो Y2 पे चले गए. Y1 फाइनल नहीं थी आपकी, सॉरी X3 और Y2 में से सिर्फ X3 फाइनल थी. Z5 आपकी आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है नॉट फाइनल. सिमिलरली B इनपुट पे आप X1 और Y1 विच इज योर इनिशियल स्टेट इसमें पहुंच गए. तो वी हैव दिस ट्रांजिशन टेबल. ये वही FA है जो मैंने अभी पहले बनाया था, डिराइविंग FA1 प्राइम प्लस FA2 प्राइम का होल प्राइम. इट इज एग्जैक्टली द सेम FA. वो थोड़ा सा क्लमजीली बना था. दिस इज नॉट मेड क्लमजीली बट इट इज एग्जैक्टली द सेम FA. टू सी वी हैड बाईपास ऑल दीज स्टेट्स. तो वो सेम FA इससे भी आप बना पा रहे हो बट यूजिंग अ स्मार्टर मेथड. इज दिस क्लियर? नो मैम. ओके, किस बात पे नो बोला था? Try Ganesh, did I miss something? I'm sorry. Okay, great. I am assuming Ganesh, you also meant the same thing. So this is the second method. Now the question is, exam में आएगा तो क्या करेंगे? L1 intersection L2 करोगे? कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर mention नहीं है तो use this method. Because obviously it is smarter, it saves your time, there is less scope of mistake. Unless and until कोई आपको बोल रहा है कि आपको लंबा वाला method करना है, तभी आप वो करोगे. Otherwise always go for this method. Unless until बोल रहे हैं specifically कि नहीं ये सारी कहानी करके दिखाओ. Just read the question carefully in case of exams. Just read the question carefully. If they are simply asking you to compute L1 intersection L2, go for this method. If they are specifically saying कि नहीं FA1 प्राइम प्लस FA2 प्राइम का प्राइम निकाल के ही करना है, वही मेथड यूज करना है, तब आप वो मेथड यूज करो. अदरवाइज दिस इज एनफ. बिकॉज मैं पेपर चेक करने जाती हूँ तो आई सी सम पीपल डूइंग दिस मेथड एंड द अदर वन ऑल्सो. तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उसमें आपको टाइम बहुत लगेगा. यू माइट लूज अ प्रेशियस क्वेश्चन. तो माई एडवाइस इज टू यूज दिस मेथड unless until question specifically बोल रहा है कि नहीं वो मेथड यूज करो. ओके, आई थिंक लास्ट ईयर ही आया था यार ये वाला क्वेश्चन. लास्ट ईयर आया था FA1 और L1 इंटरसेक्शन L2 का. लास्ट ईयर ही आया था, मुझे ध्यान है. आई डोंट रिमेम्बर इफ आई हैव द क्वेश्चन पेपर, आई विल चेक, बट आया था ये लास्ट ईयर. Okay, so this kahani is done and I have done this particular topic. I will just introduce the notion of function pumping lemma because अभी आपके पास मेरे पास आवाज नहीं है तुम्हारी, तो मुझे समझ भी नहीं आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन. So but I'll just introduce the notion of pumping lemma and tomorrow I will wind up with unit 2. Because you had no doubts for this session, so doubt session जब भी आपको doubts होंगे then we can take it in the next upcoming tutorial. Okay, so ओके, तो अभी तक हमने ना बात करी है कि लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं. बहुत सारी लैंग्वेजेस रेगुलर हमने पढ़ी भी हैं. A स्टार, B स्टार, A+B होल स्टार, इवन बहुत सारी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं.
बट कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती हैं जो नॉट रेगुलर होती हैं। अगर आप चॉम्स्की हायरार्की को रिमेंबर करो तो चॉम्स्की हायरार्की में रेगुलर लैंग्वेज का सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है। सो the regular language is somewhere here, then you have non-regular or CFGs, and then you have recursively enumerable. So basically regular languages is just a small subset. So there are many more possible languages there. So how do we know whether a language is regular or not regular? So for that we use the pumping lemma. अब अगर पंपिंग की बात कर रहे हैं तो देखो, जब रेगुलरिटी होती है ना, तो रेगुलरिटी का मतलब एक पैटर्न है, उस पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है बार 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 बार। तो पंपिंग लेमा की ना यही इंट्यूशन है कि अगर पैटर्न है, रिपीट हो रहा है, तो जो भी स्ट्रिंग है उसमें वो पैटर्न आ रहा है, वो कितनी बार भी आए, वो बार बार रेगुलर, क्योंकि वो रेगुलर है, वो पैटर्न है, तो वो लैंग्वेज, वो वाला स्ट्रिंग रेगुलर लैंग्वेज का ही पार्ट होगा। That is the intuition behind it. So there's something called pigeonhole principle, if you remember, कि आपके पास कुछ जगह है और आपके पास ज़्यादा पिजन है, तो कैन यू जस्ट कीप देम इन दोज मोर नंबर ऑफ पिजन्स in the cage. If you remember, just go and read the pigeonhole principle. But anyways, let's not confuse it over here. What I'm trying to say is that because a regular language has some pattern which keeps on repeating, अब वो मैं पैटर्न एक बार रिपीट करूँ, 5 बार रिपीट करूँ या 100 बार रिपीट करूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स आई पंप दैट पैटर्न, आई एम गोइंग टू लैंड अप विद अ स्ट्रिंग और अ वर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज. ऐसा हो पा रहा है, ये पैटर्न मिल पा रहा है जब भी मैं बार बार पंप कर रही हूँ, तो वो वाली सारी लैंग्वेज रेगुलर है. ओके, सो oh, I'm so sorry. Today something bad is really bad is happening. Is this screen visible? Great. So what I was again giving you an intuition that because a regular language has some pattern that keeps repeating, so you will find that even if there is this pattern, if I insert more patterns of this kind only, the same kind only, I will always have a string. Suppose I am starting from here and this pattern is repeating and I am ending here. So if I am ending here and if I keep repeating this pattern in between, I will always, no matter how many times I repeat this pattern, then I will always end up with a string that is a word in that language. If I am able to do that, then that particular language is regular. So it is basically exploiting the regularity. It is saying that if something is regular, no matter how many times you pump it with that regular pattern, it is always going to land up in this language. And if it is going to land up in this language, then I can safely say that this language is regular. That is the idea behind the regular languages. And now we will be using the pumping lemma theorem to prove that how the languages can be proven to be regular or not regular. So first thing is कि अगर कोई लैंग्वेज आप रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हो तो वो रेगुलर है, बट अगर नहीं डिफाइन कर सकते, इट कैन नॉट बी डिफाइंड, देन इट इज कॉल्ड अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज. एंड अकॉर्डिंग टू फ्लीज थ्योरम, रेगुलर एक्सप्रेशन, एफएस एंड टीजीज ऑल आर इक्विवेलेंट. तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए ना रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा,
ना FA बनेगा ना TG बनेगा। तो नॉन रेगुलर लैंग्वेज क्या हुई? समथिंग दैट कैनॉट बी एक्सप्रेस यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन और एन FA और a TG is a non-regular expression. So if I am saying I cannot define a regular expression, this is implied. These two things are implied. Now let's talk about this. So this is AB, AA, BB, AA, BB, BB, which is A and BN, and it is a subset of A star, B star. Can you just type in chat what is the difference between A star, B star, and A and BN? Is there any difference between A star, B star, and A and BN? Anyone can tell me the difference? Yes, Chirag. So you are right. In A and BN, number of A's and B's. So this is a restriction that A and BN में नंबर ऑफ एन सेम है। ए स्टार बी स्टार में द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज कि ए सारे पहले आएंगे, बीस बाद में आएंगे, बट कितने आएंगे उस पर हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ए स्टार बी स्टार रेगुलर है, हमने देखा है, हमने इसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाया है, तो दिस इज रेगुलर। बट व्हाट अबाउट ए एंड बी एन? इट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट दिस लैंग्वेज इज। So the next question is that is A and B and regular? So let's assume that it is regular because we are now talking about this non-regularity also. So because I have mentioned A and B and something like that, so there is one thing that you can say कि यार ये brackets use कर रहे हो, n use कर रहे हो, 0 use करते हो, ये सारा सिग्मा का पार्ट नहीं है। सिग्मा में तो A और B ही था ना, तो अगर ऐसे डिफाइन कर रहे हो तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पार्ट ऑफ माई अल्फाबेट, स्पेशली योर n is not a part of your alphabet, so I cannot say that it is taking the right definition, so it is not regular. That is one way to say this, but that is not the exact explanation of why A and B n is regular. So what we will do is we will try to create a regular expression for A and B n. Mind you, this is not a regular expression. क्यों? क्योंकि n जो है इस सेट में लाई नहीं करता, जो आपका सिग्मा है। सिग्मा क्या था हमारा? सिग्मा इक्वल्स टू A, B, इसमें कहीं भी नहीं है n था, तो दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, बट दिस इज बिकॉज दिस इज स्टार इज एन ऑपरेशन एंड n इज नॉट एन ऑपरेशन, सो दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर। यहाँ तक क्लियर? Okay, so you have answered the previous question. Is this thing clear that why A and BN is not a regular expression? I am not saying that it's not a regular language because अभी हमने इसका regular expression बनाया नहीं है, पर मैं for certainty ये कह सकती हूँ कि this is not regular expression. Why? Simply because n is not a part of my input alphabet. Is this clear? Okay. So let's assume that A and BN is regular. So if it is regular, then it will be accepted by an FA. So FA से accept होगा तो इसका मतलब कि उसकी finite states हैं और n कोई भी वैल्यू देख सकता है। अगर अब इसमें 4 स्टेट हैं और n की वैल्यू 10 है तो डेफिनेटली कोई लूप होगा FA के अंदर। अब आई एम सेइंग FA है और उस FA में सिर्फ 4 स्टेट्स हैं, so and I want to accept A10 B10. So if I want to accept A10 B10, then that means that there is a loop inside. तभी accept हो पाएगा. Do you agree with this? Okay. So FA has, so we are assuming for now that A and BN is regular, and we are trying to, because it is regular, so it must be having some FA. So now what we are trying to say is that I will create an FA, whatever it may have some number of states. It could not be 4, it may have 100 states also.
but n can take lesser than 100 values also, and it can take more than 100 values also. So if I get number of states or number of the length of input string which is greater than the number of states in the FA, I will definitely have to loop through somewhere in this FA. So let's see how we can build a possible FA. I'm not saying this is the only FA I can build. There can be any number of FAs. I am not saying that this FA is correct FA, but I'm just attempting to build it. So what I'm doing to trying is A, 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 A एक loop बना दिया, B, 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 B. So if I don't loop through, let's assume अगर मैं एक बार भी loop नहीं करती तो FA क्या accept करते हैं? A, 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 A. So this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 number of A's, and 1, 2, 3 इधर यहाँ पे रुक जाएगा या इधर रुक जाएगा. So you have this number of A's. So this is some FA. I'm not saying that this is a correct FA, but I have just tried to attempt to build an FA which is accepting certain number of A's and B's. So I want to run A10, B10. A10, B10 can be accepted something like this. Just go and loop here. 6A यहाँ complete हो गए. एक बार और loop बना दो. 1, 2, 3 and 4. So this is A10. And then what you do is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I think I marked the plus incorrectly. Your plus should be over here, and 10. So let's assume this plus is here. So here you can, create an FA which is accepting A10, B10. So, but what about A14? We are saying that A10, B10 is being accepted. So क्या A14, B10 accept हो रहा है? अगर आप जाओगे ऐसे और A10 कराओगे तो क्योंकि ये वाले सर्किट में 4 बार लूप आ रहा है तो आप एक बार और लूप कर जाओगे तो 14 भी एक्सेप्ट हो जाएगा. दिस इज 10 फर्स्ट लूप. सेकेंड टाइम लूप करोगे तो 4 और ऐड हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4. तो आपने A14 कर लिया. यहाँ पे मैंने बार बार लूप नहीं किया, मैं B10 पे आके रुक गई. तो आई एम एबल टू accept A14, B10 also in this. But what I'm trying to say is I've pumped more A's. But pump करके मेरे पास जो है ये number of A's और number of B's same नहीं रहे. So it is accepting words A and B, and no doubt it is accepting A and B, but it is also accepting some words which should not have been accepted. It is accepting words like this, and probably अगर आप इधर वाले लूप में एक्स्ट्रा नहीं भी चलते, आप इधर वाले लूप में चलो, इधर की तरफ पंप करना शुरू कर दो, so it is accepting more number of B's also. So I don't think this is the right FA. So we are just saying कि A10 के बाद 4M कितनी बार भी आप पंप करो तो 4 के फैक्टर्स में आप एक्स्ट्रा A's पंप कर सकते हो. And we don't want this. We want number of A's and number of B's to be equal. Is this okay? So sorry. So probably I might have missed. So but you understood the context that A10, B10 एक्सेप्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है. बट यहाँ पे जो सर्किट बन रहा है उसकी वजह से मेरे पास जितनी बार भी मैं लूप करूंगी 4 A's आ जाएंगे. So apart from accepting what was in this language, I am accepting something extra. More 4 A's, A14, A18, ये सारी चीजें accept हो जा रही हैं. So what I am trying to pump, and I am able to pump, but the words that were formed were not in this language. So what's the point of creating this FA? This machine is wrong. So let me create another machine. फिर से एक machine create करी, कुछ अब मैंने change कर दी machine. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can exit here or you can loop in here. And then you can say 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 A's and 6 B's are being accepted. Cool. But अब मैं अगर इसको pump करना शुरू करूँ तो I am going to do this round and just take one round of this.
So what I'm doing over here is कि 6 आया तो 6 आके मैं B के वाले रास्ते पे नहीं गई, वापस आ गई, तो 1 2 3 4 5 6 मोर एज मैंने कर दिया, तो मैं A12 B6 भी एक्सेप्ट कर रही हूँ एंड उल्टा भी कर रही हूँ, A6 और B12 भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, कुछ ऐसा। A12 B12 मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसके अंदर लूप करके। A18 भी मिक्स कर रही हूँ और A18 B6 भी कर रही हूँ। और अगर आप देखो तो आई एम, जितनी बार ये लूप बन रहा है तो मैं 6 मोर एज एक्सेप्ट कर पा रही हूँ जितनी बार भी लूप। और अगर मैं यहाँ चूज करूँ कि मुझे लूप नहीं करना तो मेरा B6 ही रहेगा या B12 रहेगा। अगर मैं उल्टा केस देखूँ कि ओके आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट A6 but what if I keep looping in here, so I will be accepting more B's no matter how much time I pump, and I will still end up in plus. So I am accepting all the words that were there in the language, plus I am accepting more words which are circuit of the number of states. So a factor of, like in this case, 6 and whatever the loop is. In the previous case it was 4 A's and जितनी बार भी आप loop करोगे। So I am all, whenever I am trying to pump, I am accepting something. अब ये मैंने बहुत ज़्यादा स्टेट्स का ऐसे बनाया, तुम फिर कोई छोटा 3-4 स्टेट्स का ऐसे बनाओगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी कि अगर इस पोर्शन में लूप करते जा रहे हो बार बार तो तुम उतने एज लूपिंग करते हो तो प्रॉब्ली उसमें रेपिटेशंस 2 की हो जाएंगी या 3 की हो जाएंगी जितना छोटा एफ बना लोगे। और अगर और बड़ा एफ बनाओगे तो रेपिटेशन है वो फैक्टर्स उस हिसाब से चेंज होते जाएंगे। बट द आइडिया इज दैट यू आर पंपिंग हियर एंड यू हैव द चॉइस टू लूप। So if such a string comes, you are going to accept it even if the fact was it was not a part of A and B n. A18 is not a part of A and B n. This is not a part of A and B n. But this is still being accepted. So no matter what I do, I will never be able to create an FA where equal number of A's and equal number of B's will only be accepted. That FA, if it will have circuit and if I try to pump it, it will accept something more. So this is, I have proven that this is not regular. A and Bn is not regular. Why? Because I can never create any such FA. You can try doing it. You will never be able to create an FA. Because you will not be able to create an FA, you will not be able to create a regular expression. So A and Bn is not regular. So that is just an intuition behind this topic. It is this is not the exact theorem. Theorem अभी मैं कल के उसमें complete कराऊंगी. But for now, is the intuition clear? Is this intuition clear? Anyone else? If you have a doubt in intuition, this is just an idea. What the idea is that if something is regular, there is some pattern, some regularity to it. अब रेगुलरिटी है तो वो रेगुलरिटी एक बार आए, 2 बार आए, 20 बार आए, उससे फर्क नहीं पड़ता. यू विल ऑलवेज हैव दैट पर्टिकुलर, जितनी बार भी आप उस रेगुलरिटी को रिपीट करोगे, यू विल ऑलवेज एंड अप इन द वर्ड दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट लैंग्वेज. तो अगर हमेशा ऐसा कर पा रहे हो तो वो एक रेगुलर लैंग्वेज है. बट अगर रेगुलरिटी को रिपीट करके ऐसे वर्ड्स, ऐसे स्ट्रिंग्स बन रहे हैं जो एक्सेप्ट हो रहे हैं पर वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज नहीं है, then your language is not regular. So that is the idea. Now we are going to talk about the pumping language, pumping theorem, pumping lemma in the next class. अगर अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो I can end the class. आवाज तो आएगी नहीं मैम. Okay, so in case you have no questions, you can just start exiting the class. For your assignments and tests, I will check whenever I get time. So please don't keep waiting for the marks. Okay, I will just check and give you the marks whenever I have some time.
You just keep on submitting and it will be evaluated in due course. Okay, so otherwise you can just leave the class. We'll meet tomorrow at 12:30 and complete this unit. Yes, you can start exiting, everyone.